Hello everyone. So welcome to Unacademy. In today's class we are going to discuss about the topic metal and its uses. So let's wait for a couple of minutes. Let others join, then we'll start our session. I'm so sorry. Those who are live, please give me a response so that we can continue our class. Okay, in the meantime let others join. In the meantime let me explain about your Unacademy. So Unacademy is your India's largest learning platform, where in one subscription you are going to access for all the exams for your OPSC, OAS and OSSC. So गोटे सब्सक्रिप्शन रे आपन टोटल मोर देन 50 आवर्स लाइव क्लास पाउछंती. ता सहित आपनकर ओडिसा रे जेकोनसी एग्जाम पई आपनकर सब बैच रे एनरोल आपन करि परबे. कोनोसी किछि रेस्ट्रिक्शन रे कोनोसी किछि रेस्ट्रिक्शन आपन नाही. सो आपन माने जेकोनसी बैच रे आपन एनरोल करि परबे. सो एथरे आपनकर मॉक टेस्ट क्विज भी आपन रहउची, फाउंडेशन रिवीजन बैच आपन रहउची. तो सब किछि एक्सेस आपन माने करि परबे. गोटे ही सब्सक्रिप्शन where you will get access to all the exams. गोटे सब्सक्रिप्शन आपन सब एग्जाम को एक्सेस आपन करि परबे इन Unacademy. So these are the top faculties of Unacademy जो माने कि आपन को हेल्प करूछंदी आपन को निज एग्जाम रो प्रिपरेशन पई. सो एमानकर हेल्प एवं एक्सपीरियंस नै एक्सपीरियंस रो हेल्प रे आपन निज निज एग्जाम रो प्रिपरेशन करि परबे. फाइन. देन if we talk about your subscription, then subscription fees be बहुत nominal अपन रही छी. So that's your 500 rupees if you are going for 1 year subscription, and that will be your 300 rupees if you are going for a 2 year subscription. So अपन माने आसी कि निज निज एग्जाम प्रिपरेशन अपन करि परिबे इन योर Unacademy. Unacademy रे जदि अपन जॉइन करछंती देन अपन इंडिविजुअल कोर्स एवं अपन बैच कोर्स को एक्सेस मध्ये अपन मिलिबो. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड से माने अपन जेकोनसी बैच जेकोनसी इंडिविजुअल कोर्स आपन जे कि देखि परिबे. या ऊपर भी कोनोसी किछि रेस्ट्रिक्शन आपन नाही. सो डेफिनेटली आपन को हेल्प करिवो. फाइन. तो जहां भी आपन लास्ट 1 ईयर रो आपन जहां भी मु इंडिविजुअल कोर्स आपन नेछि बा बैच कोर्स जोथि भी आपन जो भी फैकल्टी आपन जे कि देखि परिबे. सो यार कोनोसी किछि रेस्ट्रिक्शन नाही. रिकॉर्डिंग आपन देखि परिबे. एंड गोटे इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट आपन करबा को चाहिबी. सो ओसीएस एग्जाम जेतु वर्तमान आपन पोस्टपोन हेछि. सो Unacademy हमर 50 डेज क्लास कोर्स आपन स्टार्ट हेछि. सो आपण माने जो माने चाहउछथि यू कैन जॉइन. ओके. सो जो माने जॉइन करे चाहउछथि डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माय रेफरल कोड दैट्स पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम लाइव. सो आपण राशि की ए बैच आपण जॉइन कर परिबे. सिमिलरली हमर एएसओ बैच अछि, आरआई अमीनो बैच अछि, एएसओ रो सेक्रेटरीएट बैच, हाई कोर्ट बैच दीटे जगह आपण अछि. देन आपण ओएस रो ऑप्शनल भी चालुछि. होम साइंस आज क्लास अछि राति 10 रे समस्त आपण आसी जिबे. आमे डिस्कशन आपण करिबा. सो जो बैच अपन कहते सो एमती बहुत गुड़े बैच अपन अच्छे. एएसओ सेक्रेटरीएट बैच, हाई कोर्ट बैच, आरआई अमीनो बैच भी रिसेंटली स्टार्ट होती. मोर कंप्यूटर कोर्स चलुला. ये कोर्स अपन सरीगला कंप्यूटर कोर्स. सिमिलरली अपन ओसीएस फाउंडेशन बैच अपन रही. देन इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छी काल ठू स्टार्ट हो. फाइन. सो एमती बहुत गुड़ाए कोर्स अपन अच्छे. अपन प्रोफाइल अपन एक्सेस आपंकर मो प्रोफाइल जाकि देखिपारे. सो ये हूँ प्रगति बैच एएसओ हाई कोर्ट एमती बहुत सारा बैच अच्छे. ओके फाइन. आज टॉपिक हूँ मेटल्स एंड यूजेस. सो आसत आम स्टार्ट करवा. So those who are present please give a response. जो माने भी आपन लाइव अछंती समस्त टिके रिस्पांस आपन दे दियंतु. A very good evening to all of you. So first question before you, which of the following metals is present in the anode mode during the electrolytic refining of your copper? So okay fine. Hello Abhay and others जो माने भी लाइव अछंती. Very good evening to all of you. Which of the following metals is present in the anode mode during the electrolytic refining of your copper? Correct answer कौन होगा? So that's your iron. Okay, let's go to next question. The poorest conductor of your heat among metals is the poorest conductor of your heat among the metals is anyone? The poorest conductor of heat among the metals is. Very good morning to all, very good evening to all of you. Abhay, Dipsari, Satyavrata, Depasmita, Malati, a very good evening. Yes, the poorest conductor of your heat, that's your lead upon. Fine. So lead is upon the poor conductor of your heat among your metals. That you should remember. Let's go to next question.
which property of metals is used for making bells and strings of musical instruments like your sitar and violin? ये गोटे बढ़िया क्वेश्चन, ये एसएससी रे आपन आसीतला ए क्वेश्चन आपनकर हमर ओपीएससी रे आसीनी, सो आपनकर अपकमिंग डेज रे आसीबो देखिबो को मिलिबो। सो करेक्ट आंसर आपन कोंतु which property of metals is used for making bells and strings of musical instruments like your sitar and violin? So that's your sonorousness. Okay, so sonorousness, very very important question. So sonorousness माने कौन? Can anyone say? Sonorousness माने कौन? Anyone? Sonorousness माने कौन? So the ability of the metal to produce your sounds, right? The ability of metal to produce your sound, that's called as your sonorousness. Is this thing clear? बुझी पाले? The ability of the metal to produce your sound, right? So sound अपन जो metal produce अपन करे, so that is the property of your sonorousness. Okay, and the metal जदि अपन कर malleability अपन कौन? What is the property? What is your malleability? Anyone? Property गुडी को मन रखिबे. So malleability होची the metal can be converted into your sheets, right? And metal can be drawn into your wires, so that's your ductility, fine. And conductivity is समस्त जानते हैं, right? So जदि अपन कर electricity अपन pass करो, then we will call it as your conductivity, fine. Let's go to next question. Non-metals forms covalent chlorides because non-metals form your covalent chlorides because covalent chloride अपन form करी परियो non-metals कौन पाई कि जो मैंने आंसर देइछन आपण माने कोंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग non-metals को non-metal टा आपण व्हिच ऑफ द फॉलोइंग non-metals exist in your liquid state at room temperature? रूम टेम्परेचर है लिक्विड स्टेट अपन कोटा रही परियो को नॉन मेटल? एनीवन? हेलो, so this is your which of the following non-metal can exist in your liquid state? So that's your bromine. Okay, मन रखिबे ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी आसे रे ओएस रे एएस रे अपन मन रखिबे, very very important question, fine. And एठी अपन पछे कोवेलेंट क्लोराइड अपन केतोल फॉर्मेशन अपन हबो जेतोल अपन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन हबो, सो आखि बंद करके अपन लिखि परिबे, फाइन. सो से इलेक्ट्रॉन्स अपन शेयरिंग करले ही अपन कोवेलेंट बॉन्ड अपन हबो, फाइन. सो नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स because they can share electrons with the chloride. Let's go to next one. Galvanization is a method of protecting iron from your rusting by coating with a thin layer of कौन होगा आंसर? Galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer of अपन जानछन जेत अपन फूड कैंस गुडी को दे आर एक्चुअली कोटेड विथ योर टीन, राइट? से गुडी को अपन टीन रे अपन कोटिंग अपन होय नॉट विथ योर जिंक. कोन पई कि ये क्वेश्चंस बहुत फेमस क्वेश्चंस अपन एसएससी रो. सो फूड कैंस आर यूजुअली कोटेड विथ योर टीन नॉट विथ योर जिंक बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन योर टीन, राइट? सेथि पई कि टू अवॉइड योर फूड पॉइजनिंग हम होम साइंस स्टूडेंट्स माने अपन भलो भाबरे जानि थिबे. सो फूड पॉइजनिंग को अपन अवॉइड करिया पे आई एम सो सॉरी. सो जना नहीं दिन सारा मोर छिंक हुए नहीं यूट्यूब क्लास रे कोन पे कि छिंक हुए सब बेले. ओके आई एम सो सॉरी बट सो कौन कहते फूड कैंस कोटिंग. ओके सो फूड कैंस कोटिंग अपन टीन रे हुए जिंक रे अपन हुए नहीं बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन योर टीन, राइट? से कि फूड पॉइजनिंग को अवॉइड अपन करिया पई हमको कौन करिया पड़े ना अपन टीन. ओके सो टीन कोटिंग अपन हुए बुझी पाले समझते इज दिस क्लियर. सो टीन इज लेस रिएक्टिव. ओके सो टीन इज लेस रिएक्टिव. जदि अपन जिंक अपन करिवे देन अपन एसिड फॉर्मेशन अपन हो जिवो फूड रे अपन एसिड फॉर्मेशन हो जिवो जेटा कि अपन फूड पॉइजनिंग हो जिवो. इज दिस थिंग क्लियर समझते बुझी पाले? सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट यू शुड रिमेंबर. गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग. अच्छा रस्टिंग रे अपन वेट अपन बढ़े ना कमे ये गोटे क्वेश्चंस मते एग्जाम रे अपन पचारे. सो वेट अपन बढ़े, फाइन. सो ओरिजिनल वेट अपन रस्टिंग हेले वेट अपन बढ़िबो. सो वेट इंक्रीजेस दैट यू शुड रिमेंबर. सो एंड आपको अवॉइड अपन करा पे कोन करा जाय ना अपन जिंक कोटिंग अपन करा जाय. इज दिस थिंग क्लियर समझते बुझी पाले? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. Amalgam is an alloy of, okay fine, alloy रो क्वेश्चन. amalgam is an alloy of समस्त आंसर दियंतु. amalgam is an alloy of alloy वाला क्वेश्चन अपन गोटे पाइबे मेटल्स एंड यूजेस रे. मेटल एंड इट्स यूजेस रे alloys अपन होइबे. alloys माने अपन कोन? these are your homogeneous mixture of your metals
and your other materials, right? So जो थी कि आम कौन करूँ ना तार प्रॉपर्टी को तार प्रॉपर्टी को आम बढ़ावा देवाई तार प्रॉपर्टी को चेंज करने आम यूजुअली आलोइज करूँ as per our requirement, right? So alloy is a mixture of more than two metals, you can say, right? So two metals more than दीटा रु अधिक मेटल से मिसिबो देन आपन ताको आमे कहबा alloy. So amalgam होची आपन कोन amalgam is an alloy of, that's your mercury, right? So amalgam is an alloy of mercury, that you should remember. Similarly आपन कोन brass is an alloy of copper and zinc, right? Bronze is an alloy of, क्वेश्चन आपन एग्जाम रे पचारे brass bronze बहुत कॉमन. So bronze is an alloy of copper and tin, right? So copper and tin. Brass is an alloy of copper and zinc. Bronze is an alloy of copper and tin, fine. Then होची आपन कोंतो हमर पचार थिला क्वेश्चन alnico, aluminum nickel cobalt, right? Aluminum nickel cobalt, that you should remember. Apart from it आपनकर कपर हैला, देन होची आपनकर आउरी बहुत सारा जिंस आपनकर मिसी परिबो, फाइन. देन होची आपनकर जर्मन सिल्वर सबटू मोस्ट इंपोर्टेंट. जर्मन सिल्वर कारण जर्मन सिल्वर आपनको लागु छी सिल्वर आपन थाई बोली के, बट सिल्वर आपन एथरे न थाई. ओके, जर्मन सिल्वर रे सिल्वर आपन नाही, समस्त आपन मन रखिबे, फाइन. सो इट कंसिस्ट ऑफ योर कपर, जिंक एंड योर निकेल. इज थिंग क्लियर? समस्त बुझी पाले. सिमिलरली आपन होची आपनकर गन मेटल आपनकर होची कोन ना आपनकर कपर, tin and your zinc, right? So copper, tin and your zinc, okay? So that's your gun metal, मन रखिए. Similarly होची आपनकर बेल मेटल क्वेश्चन सब पछे पड़े. बेल मेटल होची आपनकर कपर एंड टिन. बेल मेटल जति पछरिबो गन मेटल एंड बेल मेटल, मन रखिए. बेल मेटल होची आपनकर कपर एंड टिन एंड गन मेटल होची आपन कपर, टिन एंड योर जिंक. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, फाइन. एंड जति आपनकर कॉइन मेटल पछरिबो ना ताकि कपर एंड निकेल आपन हबो, कारण कॉइन रे आपनकर निकेल परसेंटेज आपनकर कपर रे आपनकर निकेल परसेंटेज आपन रही. कपर 75% हेले निकेल आपन 25% आपन रहिबो. बुझि पाले समस्ते, फाइन. सो दीज आर द सम माने ई किछटा आपन इंपोर्टेंट alloys that you should remember, fine. And आपन को एमिति भी किछि क्वेश्चंस आपन पछर पले जेमति कि आपनकर हीटिंग एलिमेंट्स रे को मेटल आपन यूज आपन फे, फाइन. सो निक्रम आपन हबो. सिमिलरली क्वेश्चंस आपन पछर जे मेनली आपनकर इलेक्ट्रिक बल्ब रे, ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब रे आपनकर को मेटल आपन यूज होय, सो दैट्स योर टंगस्टन, फाइन. एमती सब मेटल्स एंड यूजेस रे इभला क्वेश्चंस आपन माने पाइबे, फाइन. सो दीज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट, दैट यू शुड रिमेंबर. फ्यूज वायर रे इलेक्ट्रिक बल्ब रे टंगस्टन एंड आपन फ्यूज वायर रे कोन होय, सो दिस इज द alloy of your tin and lead, right? Alloy of your tin and lead हम यूज आपन करू फ्यूज रे, फाइन. सो एनीवेज लेट्स गो टू नेक्स्ट वन. An element reacts with oxygen to give a compound with your high melting point. The compound is soluble in water. The element is likely to be, can anyone say? An element reacts with oxygen. A very good evening to all of you. Yeah, thank you, welcome Archana. So जो मैंने वीडियो देखछन गोटे लाइक कर दियंतु. An element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. The compound is soluble in water. The element is likely to be, so that's your iron, okay? So that this element is your iron. Let's go to next one. The second most abundant metal in the earth's crust. Second most abundant metal in the earth's crust. आंसर कौन हबो? So the most abundant element is, so earth's crust रे आपनकर सबठो अधिका लार्जेस्ट एलिमेंट आपन कोन, यार आउट क्वेश्चंस आपनकर रही छी. The most abundant metal आपन पचार छी. The second most abundant metal, anyone? यार आउ गोटे क्वेश्चन आपन रही छी, मु देखौ छी आपन को गोटे सेकंड. ओके, फाइन. सो से क्वेश्चन में नहीं. एनीवेज, सो द मोस्ट abundant metal कारण ये गोटे क्वेश्चन से एग्जाम रे आपन आस्तला. The second most abundant metal in the earth's crust, that's your सबठो आपन अधिका कोन आपन एल्युमिनियम. ये सेकंड आपन पछछि ना, सेकंड मोस्ट abundant element, ताले आंसर कोन हबो? That's your iron, right? The second most abundant metal in the earth's crust, that's your iron ना. एलिमेंट हमर जदी देखंतु आपनकर आमे जदी earth's crust आपन कहबा,
सो सबुठ अधिक आपंकर कहार माने सबुठ अधिक आप कौन प्रेजेंट दैट्स योर ऑक्सीजन कि नहीं अराउंड योर 46% आपंकर ऑक्सीजन आप रही बट ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल राइट कि नहीं सो ये करेक्ट आंसर कौन हम आयरन आप हम जब क्वेश्चन पचार द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट ताहले एल्युमिनियम होता बुझीपार मैक्सिमम आंसर एल्युमिनियम आप देते बट सेकेंड आप आयरन आप करेक्ट आंसर हम इज दिस थिंग क्लीयर बुझीपारे जो मैंने भी आंसर आप देते हाँ मोस्ट अबंडेंट मेटल ना एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट फर्स्ट वन बुझीपार ये सेकेंड आप पचार द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल क्लीयर ओके जो मैंने भी आंसर आप एल्युमिनियम देते जो टिके चेंज आप करेंगे लेट्स गो टू नेक्स्ट वन an alloy of zinc and copper is dissolved in a dilute HCl hydrogen gas is evolved in this evolution of your gas that's your only zinc reacts with your dilute HCl right so only zinc reacts with your dilute HCl fine technical question chhadi dochi a greenish coating develops on a copper utensils due to the formation of कोथि ପାଇଁ कि greenish coating develops on copper utensils due to the formation of आंसर सो कॉपर एक्चुअली आपंकर किसी समय पर कौन हुए ना आपंकर ग्रीन आप हो जाए राइट सो कौथि ପାଇଁ कि when it is exposed to your when it is exposed usually so basically आपन कौन हुए ना due to your corrosion you can say fine so आपन कौन हबो ना green coating आपन हो so primarily कौन हुए when copper will come in contact okay so actually rusting ro conditions अपन कौन when it will contact with your moisture right so air ro contact रे moisture water contact रे अपन आसीबो so अपन कौन हो ना rusting अपन हबो ता माने copper when it will come in contact with your moisture that's your water and अपन oxygen carbon dioxide atmosphere air रे contact रे अपन आसीबो it will form your copper hydroxide and along with your copper carbonate right and this copper carbonate ए copper carbonate सकासे ही कौन हुए ना अपन ग्रीनिश आपंकर ग्रीन कोटिंग आपन हुए बुझीपार ये आपन कौन करे ना आपन ग्रीन कोटिंग आपंकर दिए बुझीपारे फाइन सो यही चीज जो आपंकर कॉपर कार्बोनेट जो आपन फॉर्मेशन आपन होची सो फॉर दिस रीजन कॉपर आपन कौन हुए ना ड्यू टू द करोजन इफेक्ट कॉपर आपंकर ग्रीन कलर आपन हो जाए बुझीपार तो समझते सो करेक्ट आंसर CuCO3 आपन हम करेक्ट आंसर रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन करेक्ट आंसर दियंतु रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन so ordinary water भी हेई पारे सर and अपन distilled water भी अपन हेई पारे is this thing clear so both ordinary and distilled water will be a correct answer both ordinary and distilled water will be a correct answer fine next one the bronze metals so the bronze metals are made up of your so हम कहली brass is an alloy of copper and zinc bronze is an alloy of copper and tin right so this is the symbol of your tin symbol गुडी के अपन मन रखियो metals रे क्वेश्चंस अपन को रिपीटेडली अपन पचरा होची फाइन so brass is an alloy of copper and zinc and bronze is an alloy of copper and tin let's go to next one silver articles becomes black on prolonged exposure to air this is due to the formation of answer jantu so this is due to the formation of आंसर सो अगेन जमी आम आप पढ़ले कपर केस सिल्वर भी सिल्वर केस कौन हुए ना यूजुअली कौन हुए ना ब्लैक आप राइट सो जो व्हेन इट विल कम इन कांटेक्ट विथ एयर तो एगेन आप सिल्वर रिएक्शन आप सिल्वर सल्फाइड सकाशे कौन हम ना आप ब्लैक आप फाइन सो दैट यू शुड रिमेंबर एगेन एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फाइन सो आम जमी आप ब्रोंज आप देखिए सिमिलरली आप सिल्वर आप देखिए सो सिल्वर पार्टिकल्स गुड़िक जो आप सल्फर सहित रिएक्ट आप कर फाइन सो सिल्वर जो आप सल्फर सहित आप रिएक्ट आप कर इन योर एटमोस्फियर देन आप कौन हुए ना सिल्वर सल्फाइड आप हुए सो व्हिच इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर योर ब्लैक कलर ओके सो मन रखिए इंपोर्टेंट वन लेट्स गो टू नेक्स्ट वन ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड which combines with your impurities to form your fusible products known as so answer diyantu during smelting
an additional substance is added which combines with your impurities to form a fusible product known as so correct answer is upon that's your slag. Okay, so slag is upon correct answer. So that you should remember. Ore होची हमें गोटे चैप्टर अपन पढ़ी जे टोटल अपन ore टाइप्स ऑफ माने टोटल हमें सब मेटल्स रो ore गुडी को हम डिस्कशन करिजो साइंस रो क्लास रे सो अपन जेके देखि परिबे काफी हेल्पफुल अपन रही छी फाइन. सो 45 मिनिट्स रो क्लास अपन रही छी सो जाई के अपन देखि परिबे. नेक्स्ट वन. So a student placed an iron nail in copper sulfate solution. He observed that the reddish brown coating on the iron nail which is so जदि आपनकर कोन हेतिबो ना स्टूडेंट प्लेस्ड एन आयरन नाइल इन योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही ऑब्जर्व दैट द रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन नाइल व्हिच इज रफ एंड योर ग्रैनुलर राइट. सो ये टिपिकल क्वेश्चंस टेक्निकल क्वेश्चन. सो जदि आपन जंक हे जिवो सो इट विल बी रफ एंड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर आपन कबो फाइन. नेक्स्ट वन. व्हिच अमंग द फॉलोइंग alloys contains non metal as one of its constituents. करेक्ट आंसर कोन हबो. Which of the following alloys contains non-metal as one of its constituent? So brass is an alloy for copper and zinc, right? Amalgam होचे अपनकर amalgam basically it is the metal, right? So mercury होचे अपन mercury compounds होचे अपन amalgam, right? So mercury compounds होचे अपन amalgam. Questions अपन पचार थला कोन अपन quick silver अपन कहा को कुआ जाय. करेक्ट आंसर कोन हबो. पचार थला क्वेश्चन एसएस रे जे अपनकर क्विक सिल्वर अपनकर कहा को कुआ जाय. करेक्ट आंसर कोन हबो. दैट्स योर मर्क्यूरी. ओके, मर्क्यूरी की अपन क्विक सिल्वर अपन कुआ जाए. एठी जो क्वेश्चन अपन पचार ना नॉन मेटल न सो मर्क्यूरी अपन नॉन मेटल्स द कंपाउंड अपन फॉर्मेशन करे अमालगमेशन पाई. सो अमालगमेशन होचे अपन दिस इज एन अलॉय फॉर मर्क्यूरी कंपाउंड्स. सो बेसिकली जेतोले हमें नॉन मेटल्स अपन कहूचे फाइन. सो वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट योर कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, राइट. सो प्राइमरली नॉन मेटल्स गुडी जो अपन कहूचे सो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, राइट. सो कार्बन हो, सल्फर अपन हो, फॉस्फोरस अपन हो, सिलिकॉन अपन हो. सो यूज प्राइमरली अपन नॉन मेटल्स दैट यू शुड रिमेंबर फाइन. एवं तार सिंबल्स गुडी को अपन मन रखिबे फाइन. जेमिति एंड अपन मन रखिबे जेमिति कि होचे अपन लिक्विड होचे व्हिच ऑफ द नॉन मेटल्स इज योर लिक्विड. दैट्स योर ब्रोमीन, राइट. सो ब्रोमीन इज द नॉन मेटल व्हिच इज योर लिक्विड इन नेचर. सिमिलरली जेतले हमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब अपन कौन ये सब अपन गैस. ओके, सिमिलरली व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट योर आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन ये सब अपन कौन दीज आर योर सॉलिड. ओके, सो ये सब भी अपन जानी दरकार. क्वेश्चन अपन डायरेक्टली अपन पाइबे. ओके, सो दीज आर सम डिस्कशंस विथ योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आई होप दिस इज क्लियर. एंड या सहित अपन कौन करेंगे अपन alloys एंड इट्स यूजेस. सो alloys भी अपन देखिए चैप्टर रे अपन इंपोर्टेंट. सो मेटल्स एंड यूजेस जीरो क्लास रो टॉपिक थिला. So we discussed some important questions related to it. So thank you everyone. जो मैंने क्लास देखते गोटे लाइक अपन करने. आज 7 क्लास अपन नहीं, काली 7 क्लास अच्छी. काली 7 PM अपन क्लास अच्छी. 6 PM यूट्यूब क्लास, 7 PM अपन स्पेशल क्लास अपन रहिबो. आज राति 10 अपन होम साइंस क्लास अच्छी. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड अपन आसी परिबे. फाइन, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय.